ये एक छोटी सी वीडियो मैं बस दिखाना चाहूँगा एंड दैट विल गिव यू अ विजुअल सेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। बात तो बड़ी सादा सी है। जो शहरी भी हुकूमत के पास अपनी किसी रूटीन के काम के लिए आए, उसका नंबर रिकॉर्ड कर लिया जाए और उससे फ़ोन करके कोई संजीदा एहलकार पूछे कि क्या तुम्हारे साथ कोई करप्शन तो नहीं हुई, और अगर ऐसा कोई पैटर्न डिस्कवर होता है तो उस रेलेवेंट ऑफिशियल के खिलाफ जिम्मेदार ऑफिसर्स एक्शन लें। हेलो अल्लाह जी डीसीओ गुजरांवाला बोल रहे हैं। ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ? नहीं सर जी, बड़ी मेहरबानी। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? जी जी हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ? कुछ मेरा कोई 3000 रुपया लगा है। ਲਿਖਾਈ ਪੜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ? जी जी सर। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? जी नहीं जी। वालेकुम, मोहम्मद सदीक साहब बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ सदीक साहब, कमिश्नर साहब बात करेंगे, कमिश्नर बहावलपुर। जी सर। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत थी? बड़ी मेहरबानी सदीक साहब, मैं कमिश्नर बहावलपुर बोल रही हूँ, मुश्ताक। मैं सिर्फ चेक करना सी कि तुसी रजिस्ट्री कराइए कल 14 तारीख को। जी सर जी। 5 मरले दी मौजा रहीम यार खान जी सर जी। कोई तकलीफ किसी ने कोई पैसे मंगे हुए, कोई तंग किया हो तो मैंने हम दसो तरफ उन्होंने उसी फिर कितना करिए? सर बिल्कुल कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं जनाब जी, बड़ी मेहरबानी सब करते हैं। ये कॉल हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही है। आपको मुत्तला किया जाता है कि आपको हुकूमत पंजाब की जानिब से मैसेजेस और कॉल्स वसूल होंगी जिनमें आपसे दरियाफ्त किया जाएगा कि इस रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान आपके साथ कैसा सलूक किया गया और क्या किसी जायज काम की तकमील के लिए आपसे किसी सरकारी अफसर या किसी और शख्स ने रिश्वत तलब की। ये कॉल हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही है। ये बात तो बहुत सादा सी है, बहुत ही सादा सी है कि कोई सिटीज़न जो कि रूटीन के किसी काम के लिए, डोमिसाइल बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो हिज सेल नंबर, नेम इज रिकॉर्डेड एंड somebody senior, DCO, commissioner, maybe somebody else calls him up and finds out, did any corruption happen? Did you pay the required 200 rupees which were the government dues, or were you charged 500 rupees? And if there is this gap and corruption has happened, a pattern is identified and action is taken. It's a pretty simple idea, and but it has immediate impact, and that is I think its main part. आज आपने शुरू किया, कल आपने नंबर लेने शुरू किए, you start making calls, and by 3 days corruption levels wherever you make calls have gone down, and that is its main technical part. Why? Because the layers of officials which surround you as a DCO or a commissioner or anybody senior, you can just disintermediate all of them. You can reach the citizen right away. The distance is gone. There is great deterrence in the fact that 1000 numbers mein you may call only 1 or 2, and if something happens, you can find out and take action. My experience was excellent in Jhang about 2 years ago, and as was seen, it was picked up in the press, talked quite a bit. The chief minister was quite interested. It took some time for things to be institutionalized, to be scaled up, as I'll talk about. But it's a pretty simple idea. The important thing here is that usually when we fight corruption, we kind of wait for the complaint to come to us. In this particular case, we are not waiting for the complaint to come to us. We are reaching the citizen. That's the important part. And therefore, the possibility of the citizen telling us the truth और अपनी बात बताए और उससे एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो, ये एक बहुत हाई है, and this is really a big help in terms of actually dealing with corruption and finding out and having high quality daily information to do something about those things. बात तो है वाकई बहुत सिंपल सी, कॉलिंग सेंटर भी हैं, टेलीफोन भी हैं, सब कुछ आसान है इसमें
लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि दिस इज not the usual way government interacts with the citizen. The state is not the center of this transaction as is the case. The citizen is. और ये वो paradigm shift है which really makes, I think, this particular way of reaching out to the citizen quite remarkable. और ये paradigm shift के challenges हैं कि इसको implement करना, socialize करना कितना मुश्किल है. पहला issue इन सारे ideas के बारे में होता है कि जी is there political ownership? और ये सबसे बड़ा इशू है. बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जाते हैं, यू नो पीपल ट्राई थिंग्स देन दे लीव एंड देन यू नो दे ऑल फिनिश. आई बिलीव दैट देयर इज ग्रेट पॉलिटिकल ओनरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इन द पंजाब. A disclaimer must be there. I can't speak on behalf of the government of Punjab, but I know for a fact, having interacted with the Chief Minister and many senior officers for the last 6 months, that there is great interest. This idea is already being scaled out in 6 districts. Bahawalpur mein, Gujranwala, Narowal, you've heard some of the officers speaking, and this is a very unusual situation. Commissioners don't call the citizens to find out how things are happening. It has never happened. They're too detached, they're too senior, they're too kind of, you know, sitting in their big offices and too harassed and occupied by people around them to actually be able to reach out. And that's why, this is such a difficult thing to do. But there is great political ownership. We have great results. Already, I don't know, the 99.9% results ideally we should achieve. I don't know whether that is the case, but it has tremendous and immediate impact. एक तो political ownership का issue है. दूसरा जो issue होता है वो है day-to-day details, how to sort of institutionalize it. And we have good solutions for that. Government of Punjab is just about to contract a calling center which will make calls in a large scale to citizens who have received a certain transaction in certain districts to begin with in a pilot sense to get things right, and then, you know, uski basis pe corruption ke jo patterns honge action liya jayega. An SMS will be sent if you got a driving license. An SMS will be sent कि जी corruption हुई है तो 1 दबाएं नहीं तो 2 दबाएं. Or robocalls like the one you've heard will go out. Calling agents will call, and if the corruptor there's a pattern in Rahim Yar Khan, in driving license branch, in Gujranwala, in Pind Dadan Khan, wherever, we can take action and monitor officers and officials right here from the Chief Minister's Secretariat, from the Chief Secretary Office, and all the plans are actually in process to actually get this thing done. तीसरी चीज़ जो है वो बहुत बड़ा जो issue है वो ये है कि how to actually create enough impact to increase the political capital, increase it enough that they are able to scale up and increase it and deepen it and continue with it. और अगर वो हम citizen trust जीते हैं over the next 6 months or a year, I think there is great chance that this thing will even outlast Shehbaz Sharif and the Chief Minister and the Government of Punjab at this point in time, and may spread even further in other provinces and maybe the other parts of the world. Because as far as my knowledge goes, and the way it was mentioned, The Economist, this idea is being implemented for the first time in the world anywhere. Right here in Punjab. And not only being implemented, now scaled up and institutionalized, and all those processes are in place. और इसके बाद हम इसको further चीज़ों में भी लेके जाएंगे. Different kinds of services, policing, all kinds of citizen interaction. You could do interesting things. I mean, I used to call livestock farmers to find out whether, livestock doctor has actually visited them or actually asked a bribe or not. So you could monitor service quality, you could monitor, get cell numbers of the 100 housewives and find out whether sanitation worker visited that day or not. काम पे आया कि नहीं. And you can actually monitor attendance, which is a very, very big challenge in public administration. Attendance of doctors, teachers, sanitation workers. You could do hundreds of things with cell phone. Cell phone tele-density, the reaching out, the technology is just so simple. It's there. We can all use it. The political ownership is there. Now some of the ideas are there. Inshallah, a lot of interesting things will happen for the first time here in Punjab. करप्शन जो है वो बहुत किस्मों की होती है. देयर इज अ कोलुसिव काइंड, मिल के करते हैं, पैसे चोरी करते हैं गवर्नमेंट से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं. बट देयर इज द पेटी काइंड, 300 रुपये 400 रुपये, आम डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पटवारी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरी डे. 300 400 रुपये, 500 1000 2000 रुपये का ये लिमिट, 5000 रुपये तक की लिमिट होती है. With this model, we can't handle the billion rupee collusive kind of corruption. But we can take care of this, day-to-day harassment of the citizen. The message the citizen gets is the state is a rapacious state.
The state is not looking after me. The state doesn't want to look after me. These people come, these people go, Benazir, Shabaz Sharif, Nawaz Sharif, whoever, but the Patwari is the same, the SHO is the same. That message needs to go to the citizen. That is the point we need to communicate to the citizen. And we can communicate through this manner. And it's possible, it's easy, it's being done. It's already being done in a few districts. Hopefully we'll scale it up and implement it and get it organized better. Hopefully in a few months' time, Government of Punjab will come to your Nokia. Thank you.